Good morning to all. Myself Abhik Roy from the mathematicsicon channel, your mathematics teacher, and in class 12. Actually, this in this video, just we are going to discuss the differentiation chapter from the class 12. Okay, and in class 11, the another video was there. Just the 11th final candidate can see the regular classes as well, and they can join also. And those who are interested to join the classes, just you have the free space to join the classes anytime. Okay, so just join the classes. If you like my lectures, if you like my videos, and if you like my teaching technique, just give me a like actually. Okay, and please subscribe and share with your friends as well. Okay, so in this video, just we are going to discuss the differentiation questions and the concepts as well. In our last video, I think the differentiation chapter was started, and in that video I think we had discussed various types of solutions, various types of questions, concept based questions from various books. Okay, so books is not a matter. So just if you have the concept, if you have any idea, any concept and any knowledge, if you have, then just you can solve various questions from the different books as well. Okay, so just you can see the various books in the market, available in the market, and I think so far I know and which I can follow that the R.D. Sharma book and the NCERT book. NCERT is very important for clearing the basic concept, and R.D. Sharma is the reference book. As the reference books, I think there is no other book just as good like your R.D. Sharma book. Okay, so just try to buy this R.D. Sharma and then solve it thoroughly. Then I think in board exams, 100 out of 100, I think it may be achieved. And in the entrance exams also, various types of topics and the discussions is there in these books, and the various questions, okay, are also there. And for the JEE main and advanced books, actually you can buy the R.D. Sharma objective type, okay, for the JEE main and advanced. Okay, but this book is very important and very useful also for actually for getting 100 out of 100, that kind of marks in this particular subject. So and that's why just I am following this type of book. I am preferring, okay, just I preferred to my students always that now you should have bought the R.D. Sharma book as well. And NCERT is also there. NCERT is a textbook. This is the base, the foundation book. Okay, so now in this video, just we are going to discuss the differentiation chapter questions, which are very important for the basic concept and for clearing the various properties and various steps and various algorithms regarding the differentiation chapter as well. Okay, so then just write the first question. Just we are going to the pen paper लो, उसके बाद स्टार्ट करो, नाम लो, जिसका भी लेना है आप लोग ले सकते हैं, उसके बाद स्टार्ट करिए. Now just write the first question here. Okay, just write the first question. Find the differentiation of y equals to log sin x square. Okay, it is the function actually. Just you have to differentiate this given function as well. Okay, just as I told you in our last lecture, just whenever just you are going to differentiate some function, then you have to figure out the expressions. How many expressions are there? On that basis, you have to take the differentiation on the particular question as well. Okay, so here you can see the expressions number. What are the expressions? Expressions means the mathematical expressions. Mathematical expression just like sine, cos, tan, cot, exponential, log. Okay, these are all mathematical expressions. Okay, operators. Okay, so here log is your first expression, then sine is the second expression, then x square is the third expression. That means 3 expressions are there. Okay, so just 3 times differentiation should be chosen here. Okay, 3 times differentiation you have to take here. How? Just to see here, y equals to what? Log sine x square. Okay, so just take the differentiation with respect to x on both sides, that is ddx of log sine x square. Okay,
Now dy by dx. As I told you, if you are differentiating the y variable with respect to x, then you have to write dy by dx directly, because the variable is not same here, because just you are differentiating with respect to y and y is there. So dy by dx, just you have to write this line. Okay, dy by dx equals to, first expression is what? Log. Now ddx of log x, as I know, the ddx of log x formula is 1 by x. Log x, here x is there, but in place of x, what is there? Sin x square. That means 1 by sin x square you have to write. Okay, according to this formula, 1 by x, that means 1 by sin x square. So log differentiation is completed. After that, the second expression is what? Sin expression, that is ddx of sin x square. Okay, so that means 1 by sin x square, ddx of sin x equals to cos x. So ddx of sin x, in place of x, x square is there, so you have to write the same, cos x square. Then after that, the third expression is what? ddx of x square. So cos x square by sin x square, that is cot x square, and ddx of x square. In this part, you have to use which formula? ddx of x to the power n, and x to the power n minus 1. That is 2 into x to the power 2 minus 1. That is cot x square into 2x. That is ultimately the final answer is 2x cot x square. This is the final answer. Very basic questions. I think this type of questions will not come in your board exams. These are all the basic level questions. Okay, so just we'll move to the basic to the advanced level questions after clearing the concepts from the basic level questions. Okay, then okay, then just write y equals to, just write the question, next question, y equals to root over x square plus x plus 1. Now you can see how many expressions are there. How many expressions are there? First expression is root. And the second expression is whatever the term inside of this root, that will be the second expression as well. Okay, just here x square plus x plus 1 is your second expression. That means first expression is root, second expression is what? X square plus x plus 1. That means 2 times differentiation should be chosen now. How? Just you can see ddx of y and then ddx of root x square plus x plus 1. That means dy by dx equals to, at first the root differentiation should be chosen. So ddx of root x, what is the formula? 1 by 2 root x. 1 by 2 root x. ddx of root x means what? 1 by 2 root x. So ddx of root x, in place of x, this whole term is written. So what to do? We can't do anything here. So that means whatever the term in place of x, that should be written. Okay. So that is 1 by root x, there is 1 by 2 root x, there is 1 by 2 root x. In place of x, you have to write the same, whatever is given in the question. 2 root x. After that, the second expression is what? ddx of x square plus x plus 1. वही आपको लिखना है, जो रूट के अंदर होगा वही एक्सप्रेशन जो है आपको लिखना है. ठीक है, so that means 1 by 2 root x square plus x plus 1, and ddx of x square means twice x. We had done in the last question. ddx of x is what? 1, and ddx of 1 कांस्टेंट डिफरेंशिएशन नहीं होता है. कांस्टेंट का कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं होता है. ddx of 1 0, ddx of 2 0, ddx of 3 0, ddx of a 0, ddx of p अगर कांस्टेंट होता है, p अगर कांस्टेंट है तो 0. ddx of -1 0, ddx of -2 0, ddx of -100 0. कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता है. दैट मींस कांस्टेंट मींस व्हाट? वैल्यू इज फिक्स्ड, वैल्यू इज नॉट चेंजिंग. सो इफ the value is not changing, then how can you differentiate the constant value? Differentiation will be used on the particular functions whose value is continuously changing. Okay, so but a constant function, if the value is constant, then the value is not changing. So if the value is not changing, the differentiation is what? 0. So here ddx of 1 is 0. So here this is the answer. This is the final answer. Nothing to do here.
This is the final answer. Okay, very basic level question. Then write y equals to sine inverse, y equals to sine inverse a plus b cos x by b plus a cos x. Okay, this type of question is little bit important for 2 marks. बीच में क्या करते हैं, 4 मार्क का नहीं देके क्या करते हैं, 2 मार्क का 2 दे देते हैं, है कि नहीं? तो यहाँ पर जस्ट राइट हाउ मेनी एक्सप्रेशंस आते हैं. फर्स्ट एक्सप्रेशन इज साइन इनवर्स, सेकंड एक्सप्रेशन इज this one, second expression is this one. That means 2 expressions are there. So ddx of sine inverse a plus b cos x by b plus a cos x. Okay, that means dy by dx equals to ddx of sine inverse x. This whole part is x now. Now what is the formula of sine inverse x? We have derived this formula also. 1 by root over 1 minus x square. This is the formula. So here x is in place of x. What should be put here? This part. So 1 by root over 1 minus x square in place of x, a plus b cos x by b plus a cos x whole square. And then the second expression is what? This one, a plus b cos x by b plus a cos x. Okay, so here in the first part I think you can take the LCM here. So there is b plus a cos x, LCM ले सकते हैं ना, देखो तो a plus b cos x whole square by b plus a cos x whole square. Okay, and here u by v formation is there. U by v, ddx of u by v, that means 2 different expression will be in the division form. Then you have to use the formula v square, v into ddx of u minus u into ddx of v. So what about the terms in place of u and v? Just you have to put the same. Okay, just you have to put the same here, right? So here in place of u, this term is there, and in place of v is there. This now just you have to remember this formula. Just place the values whatever you have in place of u and v. b plus a cos x whole square, and then b plus a cos x ddx of a plus b cos x minus a plus b cos x, and then ddx of b plus a cos x. Okay, right? According to this u by v formula, just we have used the formula here. So here this expression will go to the numerator part. Square is there, root is there. That means only b plus a cos x will be there. Root and square part will be cancelled, and by root b plus a cos x minus a plus b cos x. Okay, and here b plus a cos x whole square, here b plus a cos x, here ddx of a is constant, that means ddx of a is 0, ddx of b cos x, ddx of cos x to means minus sin x, and b will be left because b is constant, but fortunately this constant is espoused with a variable term. That means this constant cannot be 0. Okay, so that means if you have x and twice x, the whole thing is variable here. Okay, so but just if you are differentiating this twice x, then what to do?
just if you take this 2 outside of this ddx part, ddx of x. ddx of x is what? 1. 2 into 1 equals to 2. Sorry, 1. Hold on. 2. Okay. So here, in this part, whenever this a particular constant is attached with a variable term, then this constant differentiation cannot be 0. Remember this thing. Okay. So here the same thing, b बाहर आ जाएगा. देखो ये b बाहर आ जाएगा, फिर b बाहर आ जाएगा और ddx of cos x means minus sin x, just like that. फिर minus a plus b cos x, फिर यहाँ पर क्या होगा? Minus a sin x. So here this one cancel. 1 by root b plus a cos x whole square minus a plus b cos x whole square, and in this part b plus a cos x, and here just multiply it, minus b square sin x minus ab sin x cos x, फिर माइनस माइनस प्लस s स्क्वायर sin x, फिर माइनस माइनस प्लस ab sin x cos x, sin x cos ab sin x cos x, ab sin x cos x cancel. So here this s square minus b square sin x will become, agree, by root over. You can calculate it or you can leave it here, no problem. I think actually this part should not be calculated. Okay, no need. So this square minus a plus b cos x whole square and into what? B plus a cos x. Just leave it here. This is the answer. Okay. Just if you want to proceed, then just you can use s square minus b square formula, then it can be extended. Okay. So I think if you extend this thing, then I think nothing will happen. No term will be cancelled. Actually, this term will never be actually the compressed. So no need to solve this thing. Just leave it here. You will get the final answer. Okay. Then the next question, very important question is, okay, बहुत ही important होता है ये question. अभी जो करेंगे, हो गया? लिखो. Next question. हो गया? पॉज करो वीडियो को, पॉज करके ये देखो. ठीक है? ठीक है? फिर next, y equals to log sin x square minus 3 by this one, and whole root is also there. How many expressions are there? First expression is root, second expression is log, third expression is sine, fourth expression is this. That means this is your first expression, this is your second expression, this is your third expression, and this is your fourth expression. 4 expressions are there. That means 4 time differentiation should be chosen. So that means ddx of y and then ddx of first root log sine x square by 3 minus 1. Okay. Now dy by dx. Okay. So now first one, root. So if you have the root over term, then which formula should be used here? ddx of root x equals to 1 by 2 root x. So here in place of x, this whole term is there. That means 1 by 2 root x. That means 2 root, whole term should be written. Sine x square by 3 minus 1. Root over differentiation is completed. Root के बाद क्या आता है? Log. So log x. तो ddx of log x का फॉर्मूला क्या होता है? 1 by x है ना? क्या होता है? 1 by x. लिख लो. Agree? ddx of log x means 1 by x. तो here तो log x ये है. Whole thing is x.
So that means 1 by 2 root log sin x square by 3 minus 1, और यह है 1 by sin x square by 3 minus 1, 1 by x है ना, फिर उसके बाद नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या है, साइन वाला है, दैट मीन्स दिस वन, है कि नहीं? ठीक है, फिर 1 by 2 root log sin x square by 3 minus 1, 1 by sin x square by 3 minus 1, and ddx of sin x means what? Cos x, x square by 3 minus 1, and then the last expression is x square by 3 minus 1. Okay? So in the next line, what can be written? In the next line, in the next line, cos by sin, that is cot x square by 3 minus 1 whole by 2 root log sin x square by 3 minus 1. Okay, and now ddx of x square by 3, what will be the answer of this part? X square by 3. So here 1 by 3 is constant, just take it out. ddx of x square, as you all know, ddx of x square means twice x. Okay, that means 2x by 3, and ddx of 1 is 0, constant 0. So just only you have to write 2x by 3, and these two cancel. So just write the rest of the parts, that will be the final answer. Just write the rest of the parts, this x into this by 3 into this, that will be the final answer. Okay? Okay? Next. ठीक है, find the differentiation of हो गया ये, find the differentiation of y equals to e to the power x plus e to the power minus x by e to the power x minus e to the power minus x. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट ईयर जो है सीबीएसई में आया था. ओके, नाउ ddx of y, ddx of e to the power x plus e to the power minus x by e to the power x minus e to the power minus x. So dy by dx equals to u by v formation, u by v formation. u by b फॉर्मेशन अगर हम लोग यहां पर करेंगे, फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, b स्क्वायर, देयर इज e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x होल स्क्वायर, b स्क्वायर, v into ddx of u minus u ddx of v. Okay, so dy by dx equals to, here u by b formula, only this thing that I have used, e to the power x plus e to the power minus x. Here ddx of e to the power x क्या होगा, e to the power x ही होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा है, देखो ddx of e to the power x, ddx of e to the power minus x का भी e to the power minus x ही होगा, बट देखो यहाँ पर e to the power minus x है कि नहीं, यहाँ पर हाउ मेनी एक्सप्रेशंस आर देयर, 2 एक्सप्रेशंस आर देयर, एक है e फिर उसके बाद माइनस x है कि नहीं. सो दैट मींस पहले तो e का करेंगे तो e का तो डिफरेंशिएशन ये होता है, फिर ddx ऑफ सेकंड एक्सप्रेशन के लिए जो है ऐसा होगा ना, सो e टू द पावर माइनस x, ddx ऑफ माइनस x क्या होता है, -1 होता है ना, दैट मींस क्या होगा, एक -1 आएगा ना यहाँ पर. अब बोलोगे सर इस पे क्यों नहीं किया, इसमें करो ना, यहाँ पर प्लस होगा तो क्या होगा, e टू द पावर x, ddx ऑफ ये 1 होता है ना, +1, +1 होने से तो कोई इफेक्ट नहीं होता है, बट माइनस होने से तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, इफेक्ट करता है ना, इसलिए हम लोगों ने -1 दिखाया है यहाँ पर. सेम e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x
यहाँ पर भी सेम e टू द पावर x माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस x माइनस 1 होल बाई e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x होल स्क्वायर। ठीक है, हो गया? ठीक है कि नहीं? देखो भी यहाँ पर क्या है, भी यहाँ पर क्या है, भी माइनस है ना, यहाँ पर भी माइनस है, मीन्स ये माइनस होगा। ठीक है, और v इंटू डी डी एक्स ऑफ यू, यू इंटू डी डी एक्स ऑफ v, ये ठीक है। ठीक है ना, v तो माइनस वाला है ना, ये v है, तो दैट मीन्स dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू नीचे क्या होगा, e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x होल स्क्वायर। अब क्या करना है, अब तो मल्टीप्लाई करना है? क्या करेंगे? और यहाँ पर देखो, ये माइनस जब ये प्लस के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, मिडिल में माइनस हो जाएगा ना, तो दोनों देखो, दोनों ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो ऐसे लिख सकते हैं ना। देखो तो e टू दी पावर माइनस x होल स्क्वायर, मिडिल में माइनस साइन है। यहाँ पर भी देखो e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। देखो तो लिख सकते हैं कि नहीं? तो यहां पर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू दिस होल पार्ट डिवाइड बाई दिस, उसको दिस बाई दिस लिख सकते हैं ना, ये बाई ये बाई ए, e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x होल स्क्वायर बाई e टू दी पावर x, प्लस कहां से आ गया, माइनस e टू दी पावर माइनस x होल स्क्वायर माइनस e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x होल स्क्वायर बाई e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x होल स्क्वायर। डिवाइड कर दिया, स्प्लिट कर दिया हम लोगों ने। यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाता है ना, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस ये जो पार्ट है, क्वेश्चन देखो तो, क्वेश्चन में जाओ, क्वेश्चन क्या है, ये जो वैल्यू है e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x डिवाइडेड बाई e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x, y है ना ये क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन y इक्वल्स लिखा था ना हम लोगों ने, तो दैट मींस यहाँ पर हम लोग y स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? साइड में लिखो, सिंस y इक्वल्स टू e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x बाई e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x। हो गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जस्ट मार्क इट आउट। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन जाओ, रूट ओवर लॉग रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स, मिटा देंगे। हो गया? नेक्स्ट y इक्वल्स टू लॉग रूट 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, नाउ एक काम करते हैं, y इक्वल्स टू, उसको बहुत तरीके से कर सकते हैं, है कि नहीं? एक प्रोसेस में दिखा देता हूं। देखो यहां पर ऊपर नीचे, अगर मैं ऊपर नीचे 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करूं, 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स, रूट के अंदर ही करना है जो करना है कि नहीं, बाय साइन एक्स। सो y इक्वल्स टू, थोड़ा ये फंक्शन को हम लोग थोड़ा सुंदर बना लेंगे, फिर उसके बाद प्रोसीड करेंगे। यहां पर 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एम आई राइट? सो y इक्वल्स टू लॉग रूट 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर बाई cos स्क्वायर एक्स, है कि नहीं? cos स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। सो दैट मीन्स y इक्वल्स टू लॉग रूट है ना 1 प्लस साइन एक्स बाई cos एक्स, लिख सकते हैं ऐसे, हैं? लिख सकते हैं ना, है? सो दैट मीन्स ये आ गया, थोड़ा सुंदर हो गया, देखो रूट चला गया है। तो यहां पर अभी शुरू करो,
So now ddx लो both side, ddx of y and ddx of log 1 plus sin x by cos x. So dy by dx equals to, ये भी तुम डायरेक्ट भी शुरू कर सकते हो, नो प्रॉब्लम है. यहाँ पर डायरेक्ट अगर शुरू करोगे, हाउ मेनी एक्सप्रेशंस, log is the first expression, root is the second expression, and then this part 1 plus sin x by 1 minus sin x, this will be your third expression. Okay, just you can solve, no problem. But calculation जो है वो might be lengthy, and that's why just we I think we were supposed to start the another process. Then log x, that means 1 by x, 1 by x, this whole part is x, no? So 1 by x, that means this part, and then the second expression ddx of 1 plus sin x by cos x. So dy by dx equals to cos x by 1 plus sin x into, यहाँ पर u भी होगा, cos x है, cos square x होगा, v square है ना, cos square x, तो यहाँ पर cos x ddx of 1 plus sin x, जगह नहीं है, यहाँ पर लिख लो माइनस 1 plus sin x ddx of cos x, है कि नहीं. So that means dy by dx equals to, यहाँ पर देखो एक cos x कैंसिल हो जाता है कि नहीं. तो ऊपर क्या रह गया है, cos x ddx of 1 तो 0, ddx of sin x मीन्स क्या होगा, cos x ही होगा, लिख लिया cos x, मिडिल में माइनस है, 1 प्लस sin x तो लिखेंगे. अब ddx of cos x मतलब क्या है, माइनस sin x होगा ना, होल बाई 1 प्लस sin x इंटू cos x, एक बाकी रह गया, cos square x था, एक एक कैंसिल हो गया, बाकी एक रह गया. तो यहाँ पर जो है dy बाई dx इक्वल्स टू cos square x, फिर ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस 1 प्लस प्लस sin x प्लस sin square x होल बाई 1 प्लस sin x बाई इंटू cos x, है कि नहीं. देखो तो कितना सुंदर आंसर आ रहा है. सो यहां पर देखो cos square x प्लस sin square x, आइडेंटिटी फॉर्मूला 1 होता है ना, आइडेंटिटी फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस sin x बाई 1 प्लस sin x इंटू cos x, ये भी कंसेप्ट, dy by dx equals to 1 by cos x, that is sec x, लिख सकते हैं. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है ये सब, है करने में भी मजा आता है बहुत. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जस्ट गिव इट 100 स्टार. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जस्ट राइट. y इक्वल्स टू x प्लस रूट ओवर, y इक्वल्स टू x प्लस रूट ओवर x square plus s square whole to the power n, then prove that dy by dx equals to ny by root over x square plus s square, ny by root over x square plus s square. ये है क्वेश्चन. One question is given and just we have to prove something. Okay. So in the given expression y equals to x plus root over x square plus s square whole to the power what? Whole to the power n. How many expressions are there? First, whenever, just remember this thing, whenever this power will be given, so the power expression will be the first expression. क्योंकि without differentiating this power part, we can't enter inside of the bracket. We can't enter within the bracket. We can't enter. So before entering in the bracket part, you have to calculate. That means you have to differentiate the square part. That means not square, the power part as well. So power formula, as you all know, ddx of x to the power n equals to what? N x to the power n minus
1। पावर फॉर्मूला जब कोई भी एक्सप्रेशन हो उसके ऊपर अगर आपको पावर ही दिखाई दे तो पावर का ही पहले आपको डिफरेंशिएशन करना है, उसके बाद जो भी करना है उसके बाद करना है कि नहीं? ओके नेक्स्ट आओ। So here just write given y equals to x plus root x square plus s square whole to the power n. Okay, then we will proceed. So dy by dx equals to ddx of x plus root x square plus s square whole to the power n. Now the power formula x, this whole part is x to the power n. Formula क्या है? n x to the power x to the power n minus 1. पावर फॉर्मूला खत्म, पावर डिफरेंशिएशन खत्म। उसके बाद नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या है? दिस। सो डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। ठीक है, नाउ एन एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर होल टू दी पावर एन माइनस 1। नाउ डी डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है? 1। डी डी एक्स ऑफ रूट, डी डी एक्स ऑफ रूट का मैंने बोला था, डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है? डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स मतलब 1/2 रूट एक्स। अब रूट के अंदर कुछ भी रहे आपको 1/2 रूट एक्स फॉर्म में ही लिखना है। इट मीन्स 1/2 रूट एक्स, एक्स मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। तो यहां पर जब तुम ये देखो, यहां पर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर लिख रहे हो ना, तो यहां पर भी तुम क्या लिख रहे हो? 1/2 रूट एक्स स्क्वायर। पता हाउ मेनी एक्सप्रेशंस आर देयर? पहले तो रूट का है फर्स्ट एक्सप्रेशन, सेकंड एक्सप्रेशन रूट के अंदर जो है वो है ना सेकंड एक्सप्रेशन। तो सेकंड एक्सप्रेशन डी डी एक्स ऑफ क्या करना है आपको? एक्स स्क्वायर प्लस एग्री। सो दैट मीन्स एन दिस एन माइनस 1 एंड 1 प्लस 1/2 रूट x square plus s square. ddx of x square means twice x, and ddx of s square constant. A means constant. Differentiation is 0. Here this part cancel. So n x plus root over x square plus s square whole to the power n minus 1. इस ब्रैकेट के अंदर देखो एक एलसीएम अगर हम लोग लेंगे यहाँ पर, देखो तो ऐसा होता है कि नहीं? एलसीएम लेने से देखो ऐसा है कि नहीं? लिख सकते हैं कि नहीं? ऐसे लिख सकते हैं ना? है कि नहीं? फिर उसके बाद क्या आएगा? dy बाई dx। इसके ऊपर क्या है? पावर। ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसके ऊपर पावर क्या होता है? 1 होता है ना। ये दोनों सेम एक्सप्रेशन है ना, देखो तो एक के ऊपर पावर n माइनस 1, एक के ऊपर पावर 1। तो सेम एक्सप्रेशन जो है वो अगर मल्टीप्लीकेशन में रहे तो पावर प्लस होता है ना, x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर होल टू दी पावर n माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। सो दैट मीन्स dy बाई dx, यहाँ पर प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, n x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर होल टू दी पावर n बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। ये जो पार्ट है ये y होता है ना, dy बाई dx इक्वल्स टू, क्वेश्चन में देखो ये y है ना, ये y है ना, देखो है, तो इसके जगह में y लिख सकते हैं ny बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। प्रूव्ड। कितना इंटरेस्टिंग है ना क्वेश्चन? है कितना इंटरेस्टिंग है ना? नाउ नेक्स्ट जाएंगे हम लोग। ठीक है, इतना सुंदर क्वेश्चंस हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सब क्वेश्चंस। ओके नेक्स्ट
लिखो just write if y equals to e to the power cos inverse root 1 minus x square, then prove that 1 minus x square dy by dx plus y equals to 0 ये आपको प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। ऐसा ही इस टाइप का ही क्वेश्चन है। y इक्वल्स टू क्या है, e टू द पावर गिवन लिखो, गिवन e टू द पावर cos इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कितने एक्सप्रेशन है, e फर्स्ट एक्सप्रेशन, देन cos इनवर्स, देन रूट एंड देन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है, e वाला पार्ट, सेकंड क्या है cos इनवर्स, ओके, थर्ड क्या है रूट एंड फोर्थ क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चार एक्सप्रेशन है, दैट मीन्स 4 टाइम डिफरेंशिएशन needs to be chosen. dy by dx equals to d dx e to the power cos inverse root 1 minus x square. So dy by dx equals to e to the power x, this whole part is x, so ddx of e to the power x फॉर्मूला क्या होता है, e to the power x ही होता है। ddx of e to the power x मतलब क्या होता है, e to the power x ही है। So that means e to the power cos inverse root 1 minus x square हो गया, e का क्या, फिर उसके बाद किसका आएगा, ddx of cos inverse root 1 minus x square. So e to the power cos inverse root 1 minus x square, फिर cos inverse x, ddx of cos inverse x, ddx of cos inverse x फॉर्मूला क्या होता है, 1 by root 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सामने एक माइनस रहेगा, तो यहाँ पर तो x नहीं है, यहाँ पर x की जगह क्या है, ये है, दैट मीन्स आपको भी वही लिखना है, माइनस 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज दिस पार्ट हो गया, cos इनवर्स का तो गया। फिर उसके बाद लास्ट एक्सप्रेशन क्या है, ddx ऑफ cos इनवर्स का गया है ये, फिर उसके बाद ddx ऑफ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है कि नहीं, ठीक है। फिर नेक्स्ट dy by dx इक्वल्स टू e टू दी पावर cos इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर गया। ये पूरा ये जो माइनस है एकदम सामने लेके आ जाओ, क्या करना है उसको बीच में रख, यहाँ पर जगह ही नहीं है, माइनस माइनस, तो ये होगा 1 बाई रूट, ये रूट और स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है कि नहीं, ये रूट ये स्क्वायर तो कैंसिल, तो बाकी रहेगा 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इधर रहेगा रूट का है ना एक्सप्रेशन, दैट मीन्स 1 बाई 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर गया, रूट का गया, फिर बाकी रह गया ddx ऑफ इसका 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लास्ट एक्सप्रेशन जो है। सो dy बाई dx इक्वल्स टू e टू दी पावर cos इनवर्स, सामने माइनस साइन दे दो, ये माइनस साइन बाहर लेके आ जाओ, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये 1 कैंसिल, रूट के अंदर क्या बाकी रह गया, एक्स स्क्वायर, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर बाकी रह गया, तो बाहर क्या आएगा, एक्स आएगा, 1 बाई एक्स, 1 बाई 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ddx ऑफ 1 0, ddx ऑफ एक्स स्क्वायर ट्वाइस एक्स, सामने क्या साइन है, माइनस साइन, ये 2 कैंसिल, एक्स एक्स कैंसिल, ओके, और ये माइनस मिलके क्या होगा, प्लस, सो दैट मीन्स dy बाई dx इक्वल्स टू प्लस हो जाएगा x e टू दी पावर cos इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको प्रूफ क्या करना है, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, ddx ऑफ e टू दी पावर cos इनवर्स दिस है, पहले e का किया है, देखो e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x ही होता है, लिख लिया। फिर उसके बाद cos इनवर्स का किया है, cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स है ना,
तो इसलिए एक्स स्क्वायर दिया है। फिर उसके बाद डी डी एक्स ऑफ रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या किया, ये माइनस साइन जो है यहाँ पर है 1 बाई हो गया। फिर ये 1 बाई हम लोगों ने ये देखो स्क्वायर और रूट कैंसिल होके ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर रह गया। सामने जो है माइनस साइन है तो माइनस 1 माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, पूरा होल रूट तो है ही तुम्हारे पास है, तो पूरा ये एक्स स्क्वायर आ गया। अब रूट के अंदर से एक्स स्क्वायर बाहर आ गया तो ये एक्स होके आएगा, तो एक्स होके बाहर निकाल दिया देखो। फिर उसके बाद हम लोगों ने रूट का किया डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पर रूट का किया डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 रूट दिस, ठीक है। फिर उसके बाद रूट के अंदर जो टर्म है उसका क्या है माइनस ट्वाइस एक्स। तो ये सब जो है हम लोगों ने यहाँ पर कैंसिल कर दिया, यहाँ पर ये एक्स तो रहेगा नहीं, है कि नहीं, ठीक है, हो गया। अब जो है आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ है देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स है प्लस वाई इक्वल्स टू 0, ठीक है। फिर उसके बाद डायगोनल अगर मल्टीप्लाई करो रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, ओके। और ये जो एक्सप्रेशन है उसको y नहीं लिख सकते, देखो तो इक्वल्स टू वाई, दैट इज रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ये होता है प्रूफ। एक क्वेश्चन में ये करेक्शन करो, ये क्वेश्चन में ये रूट और ये माइनस वाई होगा, ठीक है नहीं, क्योंकि देखो प्रूफ ये ही आ रहा है कि नहीं, ठीक है। ये बोला क्वेश्चन जो है प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन y इक्वल्स टू रूट ओवर 1 प्लस e टू द पावर 1 प्लस e टू द पावर x by 1 minus e to the power x, okay। then prove that dy by dx equals to e to the power x by 1 minus e to the power x, then root 1 minus e to the power twice x, 1 minus e to the power twice x। जो गिवन क्या है यहाँ पर y इक्वल्स टू रूट 1 प्लस e टू द पावर x बाई 1 माइनस e टू द पावर x। तो हाउ मेनी एक्सप्रेशंस आर देयर, पहले होता है रूट, फिर उसके बाद ये रूट के अंदर का जो टर्म होता है वो सेकंड एक्सप्रेशन होता है। सो dy बाई dx इक्वल्स टू रूट, dy बाई dx इक्वल्स टू रूट क्या होता है ddx ऑफ रूट 1 plus e to the power x by 1 minus e to the power x, agree this। so पहले रूट का तो करना है, रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, रूट x का डिफरेंशिएशन 1 by 2 रूट x, तो दैट मीन्स रूट के अंदर कुछ भी रहे तो आपको यही एक्सप्रेशन 1 by 2 रूट ऐसे लिखना है कि नहीं, 1 by 2 रूट। नाउ डी डी एक्स ऑफ ये अंदर का जो पार्ट होगा ये 1 माइनस e टू द पावर x। सो यहां पर 2 रूट 1 प्लस e टू द पावर x बाई 1 माइनस e टू द पावर x, और यहां पर तो u बाई v फॉर्मूला यूज करोगे, u बाई v क्या होगा 1 होल स्क्वायर 1 माइनस e टू द पावर x डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस e टू द पावर x, देन माइनस 1 plus e to the power x, then ddx of 1 minus e to the power x, है कि नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, यहां पर 1 बाई ये जो 2 रूट दिखाई दे रहा है ना उसको एक काम करो, ये रूट 1 माइनस e टू द पावर x को ऊपर लेके चले जाओ और 2 रूट 1 प्लस e टू द पावर x को नीचे रखो। फिर ये 1 माइनस e टू द पावर x होल स्क्वायर, इसमें क्या आएगा 1 माइनस e टू द पावर x, फिर यहां पर सिर्फ e टू द पावर x ही आएगा क्योंकि डी डी एक्स ऑफ 1 तो 0, डी डी एक्स ऑफ e टू द पावर x मीन्स e टू द पावर x माइनस 1 प्लस e टू द पावर x, और ये भी क्या होगा माइनस e टू द पावर x, है कि नहीं, ठीक है। सो यहाँ पर रूट ओवर 1 माइनस e टू द पावर x बाई 2 रूट
1 प्लस e टू द पावर x, नीचे 1 माइनस e टू द पावर x होल स्क्वायर तो है, तो यहाँ पर क्या आएगा e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x होल स्क्वायर, माइनस ये माइनस प्लस e टू द पावर x, देन क्या होगा माइनस माइनस प्लस e टू द पावर x होल स्क्वायर। वो देखो ये दोनों कैंसिल, ठीक है। फिर dy बाई dx इक्वल्स टू क्या होता है, ये कुछ कैंसिल होता है क्या यहाँ पर, देखो तो यहाँ पर कैंसिल होता है, देखो ऊपर तो e टू द पावर x प्लस 2 इंटू e टू द पावर x, और नीचे जो है देखो कैंसिल होके 1 प्लस e टू द पावर x तो है यहाँ पर, और ये दोनों में कैंसिलेशन होगा, ठीक है। कैंसिल होके 1 माइनस e टू द पावर x इंटू रूट 1 माइनस e टू द पावर x होता है कि नहीं। यहाँ पर ये 2 कैंसिल मार दो, dy बाई dx इक्वल्स टू e टू द पावर x। अब रूट ओवर वाला जो टर्म्स हैं सबको एक साथ लिख लो, ये रूट ओवर दिस एंड दिस, 1 प्लस e टू द पावर x 1 माइनस e टू द पावर x इंटू 1 माइनस e टू द पावर x तो है ही तुम्हारे पास। सो dy बाई dx इक्वल्स टू e टू द पावर x 1 माइनस e टू द पावर x, और रूट के अंदर देखो a प्लस बी या माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, ये ऐसे लिख सकते हैं ना, है कि नहीं। सो दैट मीन्स इन द नेक्स्ट लाइन व्हाट कैन आई राइट 1 माइनस e टू द पावर x, और ये रूट के अंदर देखो क्या होता है 1 माइनस e टू द पावर ट्वाइस x, e टू द पावर x होल स्क्वायर मतलब क्या है e टू द पावर ट्वाइस x है ना। ओके, इतना सुंदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है ना ये सब, है करने में बहुत मजा आता है, कैलकुलस बहुत मजेदार है, वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। ओके, दिस कैलकुलस इफ यू हैव this calculation accuracy and the confidence on this calculus, then I think in class 11 12 in college, in masters, in engineering, main and advanced, everywhere you will get the preference, you will have the first preference everywhere. Means calculus is very very important. Okay, so आज हम लोग यहाँ पर स्टॉप करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और थोड़ा एडवांस लेवल में जाएंगे, एडवांस लेवल में और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो सॉल्यूशंस हैं वो हम लोग करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे प्रोसीड होते रहेंगे, जितना टाइम जाएगा उतना ही देखो डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन जो है वो करेंगे हम लोग, डिफरेंट डिफिकल्ट लेवल, हायर डिफिकल्ट लेवल, लोअर डिफिकल्ट लेवल, मिडिल लेवल, इजी लेवल तो हो ही गया, और कितना कर इजी लेवल, ठीक है। तो आपको एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन ढूंढना है, क्वेश्चन ढूंढ के सॉल्व करना है, फिर उसके बाद हम लोगों ने जो सॉल्व किया है क्वेश्चंस, उस क्वेश्चंस रिलेटेड जो है अगर क्वेश्चंस आपको मिले तो आपको सॉल्व करना है। आफ्टर दैट इन थर्ड लेक्चर ऑफ द डिफरेंशिएशन व्हाट एवर द क्वेश्चंस विल बी सॉल्व्ड, दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस नीड्स टू बी सॉल्व्ड फ्रॉम द वेरियस बुक्स। ओके, सो आप लोगों को अगर मेरा लेक्चर्स पसंद आ रहा है, वीडियोस पसंद आ रहा है, तो आपको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना है। साइड में एक रेड कलर का जो है सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, देखो सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसमें ऐसे क्लिक करना है, ऐसे मार दो, ऐसे क्लिक करना है, ठीक है। फिर उसके बाद साइड में जो है एक नोटिफिकेशन बेल है घंटी की तरह, उसको भी ऐसे दबा देना है, ठीक है। फिर उसके बाद ये आपको अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ऐसे दिया हुआ है ना थम्स अप की तरह, ऐसे उसमें भी एक क्लिक करना है, ठीक है। ओके, आपको पसंद नहीं आ रहा है तो ऐसे एक साइन दिया हुआ है, ऐसे क्लिक करना है, ठीक है। जो भी आपको आए आप रेस्पॉन्स कीजिए, ओके, रेस्पॉन्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बट मे बी it may be positive or negative responses, but responses is very much important. Actually, this negative reinforcement and the positive reinforcement. Positive reinforcement, if you are giving this like, then I will be encouraged. I will be motivated in the positive way. Okay, so that's why this part is called positive reinforcement. Negative reinforcement means you are actually just giving this dislike. That means you are not actually this liking my channel,
and that's why just I will try to improve myself. I will try to improve my teaching methodology and teaching technique. That means I will try how to make you actually clear, how to make you how to make you too much favorable for my channel as well. And that's why just we will actually we will recover all the faults. So very much thank you for watching my channel and viewing my lectures as well. Okay, and my lectures used to be very much lengthy, and that's why I am very much sorry. This is a subjective channel that must be lengthy, so I can't do anything here. So just you have to very much passionable towards your subject, towards your concerned subject. Okay, so that's why just it may be lengthy or not, just whether it is lengthy or not, just no need to see this thing, just you have to attend the classes as well. Okay, so देखते हैं लास्ट वीडियो में क्या होता है. Just till then, stay safe, stay healthy, and stay quarantined also, and stay isolated from the social interactions. Okay, and bye. Jai Hind.